Assalamu alaikum students. Today we will learn about geography chapter 2 the earth. Okay, we have already learned about the continents. Okay, today we will learn about finding places on map, that how we find places on map, that how we study a map. We study a map by using some keys. Okay, by following the lines of latitude, lines of longitude, and by equator, by the tropic and arctic and antarctic circles. Okay, first we will study about the lines of latitude, those lines which comes from left to right of the equator line, that those lines are called as latitude. Okay, those lines which round parallel with the equator is known as lines of latitude. Okay, lines of latitude maybe get smaller and smaller because of the diameter. Okay, and uh, it go through to the north to the south equator, from the north to the south equator, south of the equator. Okay, and lines of longitude comes up to down of the equator, from up to down of the equator. Okay, and दे आर सेम इन साइज़. ठीक है, दे आर सेम इन लेंथ. ये डायमीटर की वजह से स्मॉल नहीं होते. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो है स्मॉल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डायमीटर. यू आर लुकिंग इन द डायग्राम कि देखिए लाइन कितनी स्मॉल हो गई है यहाँ आकर और नीचे आकर ड्यू टू द डायमीटर. लेकिन जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं वो स्मॉलर नहीं होते हैं. दे आर सेम इन लेंथ. ओके, next we have the international date line. You are seeing in the diagram that this center line is an international date line. All of the dates of the world starts and end on this line. This is called as Greenwich Meridian or Greenwich Observatory. Okay students, next we have the equator. The equator is the important line of latitude, and the equator line is this centered line, and it divides the world into north and the south pole. It divides the earth into two hemispheres, southern and northern hemispheres. Okay students, the second one, the next is the tropics and arctic circles. These are the tropics and arctic circles. Because of these lines we can locate the places on the map very easily. We can give the perfect position on the map or because of these lines. Okay, because of tropic and arctic and the antarctic circles. Okay, these lines help us that how we make the longitudinal and latitudinal lines on the map, that how we place how we locate the places on the accurate position on the map. Okay, next we have the topic oceans. Oceans are that the larger area is covered by the water is called as ocean. The ratio of the water in the oceans are 71%. Okay, 71% of water bodies are present on the earth. They are called as oceans. Okay, the smaller part or the edges of the oceans are called as seas or bays. Okay, as the geographers studied about the ocean, they can come to known as that there are only three oceans. They are the Pacific, Atlantic and Indian Oceans, and the Arctic Oceans join the Atlantic Ocean by the north side, and the Southern Ocean join the Antarctic Ocean by the south pole. ठीक है, let's study about the depth of the ocean. The average depth of the ocean is 4,000 meters, and if we measure the depth of the Pacific Ocean, that is 11022 meters or more than 11 kilometers. ठीक है, and if we talk about the Mount Everest, that उसकी depth कितनी है पानी में, that is about 2.2 kilometers below the surface. Got it?
without oceans life on earth is not possible. ठीक है, earth would be like a desert, or the temperature will be ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म हो सकता था विदाउट ओशंस। ठीक है, ओशंस की इम्पोर्टेंस क्या है? ओशंस आर द सोर्सेज ऑफ रेन विच डिपेंड्स फॉर विच द वर्ल्ड डिपेंड्स फॉर क्रॉप्स एंड लाइफ। ओशंस हेल्प अस टू रेगुलेट द अर्थ्स टेम्परेचर, अर्थ की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर ओशन नहीं होते तो सिर्फ और सिर्फ वार्म होता अर्थ, अदरवाइज और लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती। ओशन प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओशन आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर फिश एंड शेल फिश, सीवीड और प्लांक्टन। ओशंस आर फ्लोर सप्लाईज of some minerals like oil and gas. Okay, next we have the topic water cycle. Water cycle is very easy topic, as you all know that हमारे पास रेनफॉल किस तरह से होती है। रेनफॉल वाटर साइकिल के प्रोसेस की वजह से होती है। एज द डायग्राम शोज ओवर हेयर, डायग्रामेटिकली देख लीजिए, हमारे पास सी एरिया है, वहाँ टेम्परेचर जब वार्म होता है हमारे पास तो वाटर जो है एवापरेट होते हैं। वाटर एवापरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में एवापरेट होते हैं और क्लाउड्स बनते हैं हमारे पास स्काई में जाकर क्लाउड्स बनते हैं, और फिर रेनफॉल या फिर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो स्नोफॉल होती है। गॉट इट। फिर उसके बाद वो पानी रिवर्स और डैम्स में जाता है, एग्रीकल्चरल साइड पे जाता है, हमारे कल्टिवेटेड लैंड्स और फील्ड्स में जाता है, और वहाँ हमें रेनफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Okay, the topic is end over here. You should study or read the topic very carefully. The water cycle, oceans, lines of latitude, longitude, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से read करें, and mark the important lines from it, mark the importance from these topics, and do cover the topic by reading it again. And this topic is end over here. We will study more topics regarding this chapter in the next class. Okay, Allah Hafiz.